Welcome to another episode of Good Loans by LoanTap. So today we have a very special episode because today we have here with us Mr. Saurabh Dutta. So he's a service delivery manager and he's based out of Gurgaon. So हम सौरभ से बस इसलिए बात कर रहे हैं बिकॉज हम जानना चाहते हैं कि एक कस्टमर, एक नॉर्मल आम इंसान हमारे जैसा, वो इस दुनिया में जैसे उनके जो भी सपने होते हैं, जो भी एस्पिरेशंस होते हैं, उनको पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करता है। बट क्योंकि महंगाई बढ़ गई है और इंसान के सपने भी बढ़ गए हैं, तो उसके लिए बहुत सारे कंपनीज भी आए हैं, जैसे लोन्स हो गया या जैसे बाय नाउ पे लेटर हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा चल रहा है। अगर आपकी सैलरी अभी मंथ एंड चल रहा है, हाथ तंगे है, तो बाय नाउ पे लेटर करके आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। आजकल तो ऐसा भी हो गया कि अगर आप पैसे है भी, पर क्योंकि उससे पेमेंट एक वन टैप पे हो जाता है, तो लोग लेज़ी पे से पे करते हैं, फिर बाद में उसको एज़ अ पोस्टपेड बिल पे कर देते हैं। तो सौरभ, आपसे बस हम यही जानना चाहेंगे, जैसे अगर लोन को लेके आपका क्या ख्याल है कि लोन मतलब कैसी चीज है, क्या है लोन? लाइक बेसिकली जब हमने पहली बार सुना कि लोन, तो आपके दिमाग में क्या बात आई थी? तो मेरे को ना हर समय यही लगता है क्योंकि आई एम अ प्रॉपर अकाउंटेंसी स्टूडेंट। लोन्स लोग लेते हैं दो टाइप के। वन ऑफ देम इज रिस्की, द अदर वन इज आई थिंक द राइट वे टू डू इट। द राइट वे टू डू इट है कि समझो मेरी सैलरी एक्स अमाउंट है। मैं जैसे आपने कहा कि मैं आज के दिन में समझो 2 लाख या 5 लाख नहीं निकाल सकता, मेरी कोई एक्सपेंस है। क्योंकि सैलरी मेरी शायद 5 लाख नहीं आती है। तो उस लेकिन आई हैव द कैपेबिलिटी कि वही अगर जो बर्डन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अलोंग विद इंटरेस्ट एक्सेट्रा, तो आई एम मोर केपेबल टू पे। ऐसे डिसीजंस में लोन लेना लोन देना आई थिंक इट्स आई फील या आज का नॉर्म है। एंड ऑल्सो बिकॉज आज टुडे ये जो मतलब कंज्यूमर गुड्स इट्स बिकम सो एक्सेसिबल, राइट? आज 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 हमारे जो ई कॉमर्स वाले वेबसाइट्स हो गए, अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, आप घर बैठे मतलब एक घर छोड़ के बाकी सब कुछ ही ऑर्डर कर सकते हो। आज तो गाड़ी भी ऑर्डर कर सकते हो। तो इससे क्या है, मेरी परचेजिंग पावर तो बढ़ी है, बट शायद आज की जनरेशन उतना सेविंग्स पे ध्यान नहीं देती है। दे हैव दिस मंत्रा कि आज के दिन हम खर्चा कर लेते हैं, सैलरी है, सिक्योर्ड लाइफ है, सिक्योर्ड जॉब है, बट एक्सपेंस को हम थोड़ा स्प्रेड कर लेते हैं। सो आई फील वो ठीक है। आई लाइक दैट अप्रोच। व्हाट आई एम अगेंस्ट इज अगर आपको प्लानिंग में ये दिखता नहीं है कि आप अगले 1 साल में या 2 साल में आप इस लोन कमिटमेंट को फुलफिल कैसे करोगे, दैट इज रिस्की। क्रेडिट कार्ड्स इज ऑल्सो लोन, राइट? अनसिक्योर्ड लोन्स। तो क्रेडिट कार्ड आज हमने भाई जैसे सिमिलर टू क्रेडिट कार्ड, राइट? क्रेडिट कार्ड में पीपल आर स्मार्ट। कभी वो क्या करते हैं कि आपकी एक्सपेंस है, वो आप क्रेडिट कार्ड में एक्सपेंस करे हो, लेकिन आपको पता है कि मंथ में एंड में या आपके 3 महीने बाद में बोनस आने वाली है, उससे आप पे कर दोगे। तो या तो आप इंटरेस्ट नहीं पे करोगे या कम पे करोगे। बट जहां पे ये बात आती है ना कि आपके फ्यूचर में मतलब वो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल दिखती नहीं है कि आप इसको फुलफिल कैसे करोगे, वहां जब आप लोन लेने जाते हो तो दैट इज अ रिस्की अफेयर, बोथ फ्रॉम अ लेंडर्स पर्सपेक्टिव एंड द वन हु इज लेंडिंग। तो वी आर इन एन इकोनॉमी जहाँ पे ये बोरोड मनी पे ऑब्वियसली हम अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर करने की चाहते हैं और करते भी हैं। एंड द फैक्ट कि आज के दिन में ऑप्शंस इतने सारे हैं, so we have a demand and we have a supply both. So I think right now it's the right state in terms of loans are concerned. Like as you said, the people are moving into a borrowing phase, and also it is said that the future will be more सब्सक्रिप्शन ड्रिवन देन ओनरशिप ड्रिवन। जैसे गाड़ियां Hmm. भी लोग सब्सक्रिप्शन में लेके यूज करेंगे rather than ओनरशिप। तो उसमें आई थिंक लोन प्लेज अ वेरी बिग पार्ट, because because I think buy now pay later and credit cards is also like a subsequent product of a lending only. बिकॉज Hmm. लोन आई थिंक जनरली लोग बड़ी बड़ी परचेजेस के लिए लेते हैं। जैसे घर इज एन एसेट जो कभी सब्सक्रिप्शन मॉडल में चलेगा नहीं। सबका सपना होता है कि अपना एक खुद का एक घर तो हो एंड ऑफ द साइकिल या एंड ऑफ आवर वर्किंग टेन्योर, या जब भी हम सेटल होना चाहे। गाड़ी चलो फिर भी गाड़ी का ऐसा हो गया, जूम कार्स हो गए, ओला उबर इतने एक्सेसिबल हो गए, एज यू सेड कि जनरेशन उतना ज्यादा फ्रेट नहीं करती है गाड़ी के ऊपर। बट यहाँ पे एक बात आती है कि लोन्स ले तो लेते हैं, क्रेडिट कार्ड्स ले भी लेते हैं बिकॉज आप बहुत आसानी से मिल जाती है, नो जॉइनिंग फीस है उसकी। Hmm. बट उसको मैनेज करना, उसके बारे में वो लॉन्ग टर्म की उसको कैसे मैनेज करेंगे, फिर उसके लिए लोग एक और लोन ले लेते हैं, एंड देन दे प्रॉब्ली गेट इनटू अ ट्रैप। एंड वट एवर हैपेंस राइट नाउ इन दिस वर्ल्ड इज कि जो चीज़ों के साथ जो गलत होता है उसका न्यूज़ ज़्यादा स्प्रेड होता है।
rather than न्यू उसके साथ अच्छा क्या हो रहा है. आज के दिन में ना अगर आप जनरल ओपिनियन पूछोगे, दे आर लाइक नहीं यार, आई डोंट वांट टू डू दिस ऑनलाइन बेस्ड एप्लीकेशन, क्योंकि ना हमने सुना है कि ऐसा होता है वैसा होता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो आई जस्ट वांटेड टू से कि योर पॉइंट इज एब्सोल्युटली राइट. चंद बैड एप्पल्स के लिए इट रियली रियली डर्टीज द होल पॉन्ड. Yeah, I mean, rightly said. As you also said, so do you want to talk about कि because I was going to ask you कि इससे पहले आपने कभी lending लिया है इसके पहले, और is जरूर. it your first time experience? I have taken so honestly speaking, my oldest relationship has from the time I was 25, 28, I don't know, must be at least 14, 15, 18 years, right? So you tend to generally depend on them about every other relationship that you want to get into. But I always feel कि शायद ऐसा होता है ना कि जब when you're dealing with a big corporation, you're आई फील कि वो जो ह्यूमन टच होता है ना बिटवीन दी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड द कस्टमर, वो कम होते हुए दिखता है. आई गिव यू स्मॉल एग्जांपल, राइट? आज मैंने जो लोन ली, आई वाज टॉकिंग टू लोन टैप थ्रू ईमेल्स एंड ऑब्वियसली कस्टमर सपोर्ट, डॉली एंड ऑल ऑफ देम. तो मैं सच्ची बता रहा हूँ, मेरे को 1% भी वो नहीं था कि somebody will respond to my emails that I was sending. मेरे को 1% भी कॉन्फिडेंस नहीं था when I started कि I will, anytime I'm calling people, and at one point of time it was so desperate because I had, I was doing home renovation and I hadn't planned it well and people were already there. I needed the funds. I didn't think that there are bank का working days भी होना जरूरी है, and I was calling people left, right and center and they always answered it. I wasn't expecting any of that, but the same experience for a different reason altogether just about 3 weeks back, right? And I seriously did not feel like somebody who is their privileged customer, somebody uh, somebody who they should be dealing with kindness and as a human being. And to me it felt like, you know what, my point is, don't call me sir, call me by my name, I'm fine. But the point is, don't forget that you are in the business of customer service, period. The financial gain that you get is a byproduct of the customer service you provide for the products you sell to your customers. And and it's so, which is why I even thought ki some of these companies that were not too well known in the market, because you are not on print media advertising or any other form of advertising. And I realized that sometimes, as long as you do your paperwork right, you do your investigation right, and you have the ability to judge कि आप जिससे बात कर रहे हो, are they genuine, do they follow the right processes, and do they give you false expectations, or do they, even if difficult, they tell you, a spade is a spade. If you are confirmed with all of that, it's okay to trust this so-called smaller fintechs. That's my experience, really. I think what you said fares a lot in today's generation also, because because everything is accessible to everyone. Now people are looking कि ये मेरे लिए personalized कैसे हो सकता है. They want to feel कि ये product मेरे लिए बना है. It's like a Yeah, pizza. Pizza is the same product, पर सबके अपने अपने toppings preferences होते हैं. And सबके लिए होता है ये absolutely, मेरा वाला pizza है, ये absolutely. मेरा वाला pizza. And I Yeah, and think होटल के लिए it can't be कि भैया होटल में, मैं शायद होटल में क्या कोई भी इंडस्ट्री में, I may be one of your 1 million customers, right? But for me, I am the one. For me, I expect that service from you because boss, there are hundreds of other banks and there are thousands of other NBFC backed fintech and stuff like that. You are not the only one, right? At this point of time. So to feel that you are, doing that favor to the customer, and customer feeling like, oh, you know what, please kar do, I think that's not done. because right now there is also a case of many Chinese fraud apps coming around, giving them excellent deals, too good to be true.
and people had one bad experience, and they were like, no, no, I'm not going to take a loan ever again. So yes, I mean, these things happen. And I think what you said right now about to basically have a clear head about what you want while taking a loan, because loans is not something that you're getting for free. It's like a responsibility, as you said, and you have to manage it. So I Totally. think that's true what you said. But also there was one point that's in my mind, that like the small kind of loans that are coming around, right? Like, what is your what I say, advice or suggestion, or would you think, or like, would you want to be into, like, if you have money in the bank, right? Would you still go for buy now, pay later? Maybe I will still go with buy now, pay later, because the way I look at it is, let's say if I save 10% of my salary, I would probably put it in a put it in an investment tool, because that will still earn me money. Maybe it's an RD, maybe it's an FD, maybe it's whatever. And I don't necessarily want to break that path to fulfill this need. Now I know this will mature in 6 months, for example, my FD, RD, whatever is there. And this is like, I need only about 10K or 20K or 30K or 40K, right? So for me, I would, um, if it's if it's an expense on consumer durable, especially, or um, mostly consumer durable, I would say, or home improvement, etc. I don't want to touch that money now. I'm Because maybe the cost that I will pay extra on this borrowed money will not be compensated by the interest I'll earn on my FD or RD, but but I still want to have that peace knowing that यहाँ से अगर निकाला 2 लाख from my savings तो वो निकल गया. यहाँ पे अगर लोन से मिल गया तो my burden is spread out over 10 months, 12 months, year, 2 year, 5 years. So just last thing, any one liner that you want to share about your loan experience, just one line. One thing that I've been very conscious about is, how much I can afford. So I've never, except for the time when there was a lockdown and stuff like that, I've never gotten into trouble with loans per se, right? But I've had poor experiences too, where I can feel now that my information was taken to really sell the data. I'm happy about the loan decisions I've made in my life. Mostly, I would say 20% of the times I've been really, really messed. But this experience has made me very cautious about it. Well, lastly, I want to say, Saurabh, thank you so much for, for giving your time and talking so much to us. Because I think it's rarely that people talk about loan. It's like a taboo word in the society also. Even in the family, no one wants to tell people कि मैंने loan लिया, and everyone like, तू loan लेके क्यों कर रहा है, तूने loan लिया है. Let's hope these things change, and borrowing isn't some kind of a taboo word, but it's something kind of like an aspirational word. Like, if I'm borrowing it to do something big. Okay, I'm taking a Right. risk, and I'm doing what I want to achieve. So I just want to say thank you, thank you, thank you so much for giving your 2 cents to the people and to us. And whatever you said about LoanTap is duly noted, and we will surely work on it. And I hope you have a nice day today. You too, Shantanu. Thank you for talking. And trust me, the only reason I'm doing this is only because of the experience I've had with LoanTap. I think I just want you guys to do really, really well, grow and do better. But thank you for talking, and you have a good time ahead, and happy holidays. Thank you, thank you. Same to you, Saurabh.